हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यूज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के पार्ट 2 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और आज की वीडियो में फर्दर हम 25 क्वेश्चंस जो कि पार्ट 3 पे मुश्तमिल हैं उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 प्रेजेंट किए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट और शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चन है रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्स और जॉब इंटरव्यूज। तो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के सिलसिले में रहनुमाई हासिल कीजिए। सिफ्टेक सिंप्लीफाइड एक प्लेटफॉर्म है जो हमने सिविल इंजीनियर्स और प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डेवलप किया है। सो इस कॉज को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब, जहां पे मैं आज का लेक्चर आपको प्रेजेंट करूंगा। सो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट MCQ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए इज टेंडरिंग, ऑप्शन बी इज एस्टिमेशन, ऑप्शन सी ब्रीफिंग, ऑप्शन सी कमीशनिंग। सो इनमें से कौन सा एक स्टेज है जिसको हम फेज नहीं कह सकते बल्कि एक एक्टिविटी कहा जा सकता है? वो है ऑप्शन बी एस्टिमेशन। एस्टिमेशन एक एक्टिविटी है फर्दर रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। सो टेंडरिंग ओवरऑल एक फेज ऑफ द प्रोजेक्ट है, ब्रीफिंग भी फेज है और कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट भी एक फेज है। बट एस्टिमेशन जो है वो दैट इज नॉट अ फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? ब्रीफिंग, designing, construction, all of the above. So yes, all these are the phases. So option D is the correct option, which is all of the above. So briefing, designing और construction तीनों जो हैं वो phases of the project हैं। Feasibility report is prepared in which phase of construction project? Feasibility report जो है वो briefing के दौरान या प्रोजेक्ट इनिशिएशन के दौरान प्रेजेंट की जाती है या बनाई जाती है। ऑप्शन ए इज कमीशनिंग, ऑप्शन बी इज कंस्ट्रक्शन, देन टेंडरिंग एंड ब्रीफिंग। तो इनिशियली ब्रीफिंग है, उसके बाद टेंडरिंग है, फिर कंस्ट्रक्शन है और अल्टीमेटली इसकी कमीशनिंग होती है किसी प्रोजेक्ट की। सो ब्रीफिंग ऐसा स्टेज है जिसमें प्लानिंग या फिजिबिलिटी वगैरह का काम किया जाता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज इज डन इन विच फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए इज डिजाइनिंग, सॉरी, ऑप्शन ए इज कंस्ट्रक्शन, बी इज ब्रीफिंग, सी designing and D is tendering. So estimation is the part of project designing. C is the correct option. Notice inviting bidders or tenderers is published in which phase of construction projects? Option A is briefing, B is designing, C is tendering and D is construction. So NIT जो है वो पब्लिश किया जाता है टेंडरिंग में और इसमें हमने काफी डिटेल्ड वीडियोस प्रोक्योरमेंट के ऊपर दी हैं और हमारी 3 वीडियो सीरीज और प्लेलिस्ट अवेलेबल है सिफ्टेक सिंप्लीफाइड पे। आप उसमें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में पेपर रूल्स के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं टेंडरिंग के हवाले से। सो एनआईटी जो है वो टेंडरिंग के फेज में प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन 56, शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ अ बिल्डिंग इज प्रिपेयर्ड इन विच फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए इज कंस्ट्रक्शन, बी इज डिजाइनिंग, सी इज टेंडरिंग, डी इज कमीशनिंग। सो डिजाइनिंग सबसे पहला फेज होगा, उसके बाद उसी की बेस के ऊपर टेंडर किया जाएगा, उसी टेंडर की बेस पे कंस्ट्रक्शन की जाएगी और फिर कंस्ट्रक्शन जब हो जाएगी तो इक्विपमेंट को या प्रोजेक्ट को कमीशन कर दिया जाएगा या ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और वो जो O&M का काम है वो डेफिनेटली ऑपरेशंस का काम है, सो वो कमीशनिंग के अंदर आता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 57, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट? ऑप्शन ए इज कंप्लीटिंग द वर्क विद इन एस्टिमेटेड बजट एंड टाइम, ऑप्शन बी टू कंप्लीट द वर्क एज पर स्पेसिफिकेशंस, ऑप्शन सी टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। So all of the above is the correct option, and all these options are the objectives of construction management. Construction management के अंदर हम ये चाह रहे होते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो विद इन एस्टिमेटेड बजट, एस्टिमेटेड टाइम, क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक इम्प्लीमेंट हो और एग्जीक्यूट हो। इस वजह से हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि प्रोजेक्ट हमारा डिले ना हो, उसकी क्वालिटी खराब ना हो, स्पेसिफिकेशंस भी इम्प्लीमेंट हो और टाइमलाइंस और बजट का भी ख्याल रखा जाए। So D is the correct option. Question 58. In which of the following situation construction management is not needed? Option A, to coordinate between different agencies. Option B, to bid for the tender. Option C, to achieve speed and economy in construction, to control quality and workmanship. So इसमें से कौन सी सिचुएशन है जिसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? So bidding, to bid the tender is the correct option, because उसके अलावा जितनी भी हैं उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जरूरत होती है या वो हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स।
59. Which of the following is not the function of construction management? A. Planning, B. Scheduling, C. Staffing, ऑप्शन डी टेंडरिंग। तो टेंडरिंग जो है वो एक बिल्कुल अलग पार्ट है, उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, वो प्री कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है। अदर देन टेंडरिंग, ऑल दीज आर दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, प्लानिंग भी, स्केड्यूलिंग भी और स्टाफिंग भी। इसीलिए इन तीन के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होगा और टेंडरिंग जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। So D here is the correct option. 60. Which of the following is a function of construction management? Option A, communicating, B, designing, C, tendering, D, cooperating. So A is the correct option. Communicating is the function of construction management. Which type of the construction project can be termed as infrastructure construction projects? Option A is highway construction. Option B, high-rise construction. Option C, bridge construction. Option D, nuclear power plant construction. So infrastructure construction projects में high-rise building, high-rise construction B जो है वो आता है. So B is the correct option. Which of these is not a type of industrial construction? इनमें से कौन सी है जो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन नहीं है? कंज्यूमर गुड्स फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन, ये भी इंडस्ट्री में आता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये भी इंडस्ट्री में आता है। Housing society construction, that is a domestic or residential sort of work, so that is not the industrial. And 4 is chemical plant construction, so 4 is also an industrial construction project. So C जो है वो हमारा correct option है, आंसर है यहाँ पे housing society construction. 63. Which of these is a type of resource of construction industry? Manpower, B, money, C, material, all of the above. So yes, तीनों जो है ये resource of construction industry हैं. So D here is the correct option. Which of these is not a stakeholder of construction project? Option A, owner. Option B, public. Option C, engineer. Option D, contractor. So stakeholder जो है construction project का owner भी है, of course engineer भी है और contractor भी है. Public जो है वो इस तरह से stakeholder नहीं है construction management की हद तक. So B here is the correct answer. 65. Which of these is not a duty of owner in construction project? Owner की कौन सी ड्यूटी नहीं है इनमें से? Option A, to provide necessary land or site. Yes, ये तो owner की ड्यूटी है. Provide necessary plans and drawings, ये भी owner की है. To execute work as per specification, execution जो है वो owner की responsibility नहीं है. To arrange funds arrange करना भी owner या employer की जिम्मेदारी है. So C is the correct option, to execute work as per specs. ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है. What should be the function of organization? Option A, coordination of various departments, to prepare structure of organization, to monitor various activities and progress. D, all of the above. So yes, all these are the functions of an organization. किसी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेट करना, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्रिपेयर करना या मॉनिटर करना डिफरेंट एक्टिविटीज को, उनकी क्वालिटी को और उनकी प्रोग्रेस को. 67. Select the below principles of ideal organization. Option A, unity of job assignment. Option B, span of management. Option C, separation of work. Option D, all of the above. So D, yes, is the correct option, all of the above. Unity of job assignment, span of management, separation of work are the principles of ideal organization. 68. What is the significance of unity of command as principle of organization? Option A, employee should be able to work independently. Option B, employee should work in team unity. Option C, employee should know to whom he is or she is answerable. Option D, none of the above. So yes, C is the correct option, जिसमें employee को ये पता होना चाहिए कि उसकी रिपोर्टिंग लाइन क्या है, उसने किसको किस एक्टिविटी के लिए या ओवरऑल रिपोर्ट करना है और किसको वो आंसरेबल है. सो यूनिटी ऑफ कमांड का मेजर प्रिंसिपल जो है वो ये है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Delegation of power or authority as principle of organization means. Option A, to allocate duties and responsibilities, to allocate funds and resources, to allocate time, none of the above. So A जो है वो correct option है, to allocate duties and responsibilities. Delegation of power या authority का major principle है, to allocate duties and responsibilities. A is the correct option. 70. By which pattern different structures of organizations can form? Option A, number of employees. Option B, manner of distribution of authority. Option C, number of divisions, type of work done. So कितने पैटर्न्स हैं जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी. सो कितने तरीके से आपने डेलीगेशन ऑफ पावर्स की हुई है, वेदर इट इज फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव,
किस लिहाज से आपने की हुई है। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तीनों जो है वो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। सो ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो सी हियर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें बोथ ए एंड बी कवर है। 72 which of these is not an advantage of line organization? इसमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का? ऑप्शन ए, इट परमिट्स क्विक डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, ऑप्शन सी, इट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, ऑप्शन डी, इट इज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। सो जो लास्ट है रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, ये इसका एडवांटेज नहीं है बल्कि ये इसका डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग इसका एडवांटेज है, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन भी होता है इन ऑर्गेनाइजेशन में, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, और मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल भी होता है। 73 which of these are disadvantages of line organization? Option A, top executives are overloaded, option B, system has no provision of rewarding good workers, option C, inadequacy of communication, option D, all of the above। सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के जो नुकसान हैं में से ये सारे हैं। टॉप एग्जीक्यूटिव्स हमेशा ओवरलोडेड होंगे क्योंकि डिसीजन मेकिंग सिर्फ उधर से ही आनी है और उन्होंने डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं की हुई। सिस्टम के अंदर जो बेहतर काम करने वाले और अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको रिवार्ड नहीं किया जाता, और इन एडुकेसी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो चूंकि एक ही लाइन से या एक ही जगह से आनी होती है, तो वो नॉर्मली ओवरलुक हो जाती है, और लाइन मैनेजर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ये तमाम जो है इसके डिसएडवांटेज। 74 लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर, ऑप्शन ए, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स enterprise, option B, enterprise undertaking heavy projects, option C, key men need expert advice, option D, all of the above। So yes, option D, all of the above is the correct option। Line and staff organization के लिए ये चीजें suitable नहीं है। 75 dash is the advantage of line। तो इसमें line and staff organization के फायदे कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, project can be executed with better quality, option B, it provides more job opportunity, option C, discipline problems are solved by line authority, and option D, all of the above। So yes, option D here is the correct option। इसमें project की क्वालिटी भी बेहतर रहती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होती हैं, और डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स जो है वो भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन या लाइन अथॉरिटी या लाइन मैनेजमेंट की तरफ से सॉल्व होते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। So thank you for watching. You have completed part 3 of our Construction Management MCQs video series, जिसमें हमने ओवरऑल अब तक 75 MCQs सॉल्व किए हैं, और ये वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं प्रोफेशनल इंजीनियर्स के लिए, फ्रेश इंजीनियर्स के लिए, या वो लोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं या गेट टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पार्ट 3 ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट किए। आई होप आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी, और इस तरह की और वीडियोस के लिए CivTech सिंप्लीफाइड फैमिली का हिस्सा बने, जहां पे आपको सिविल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, पेपरा रूल्स और मैथमेटिक्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंप्लीफाइड वे प्रेजेंट किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।